यह सारे इंजीनियर्स का एक बड़ा सवाल है. Is DSA really important? Name 3 YouTube channels you suggest for the freshers engineers जो 12th के बाद जस्ट आए हैं और वो चाहते हैं कि यार कौन सा ऐसा YouTube चैनल है जो मैं देखूं जिससे मेरे को सब कुछ मिल जाए, सब कुछ मैं सीख लूं. कॉलेजेस में मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में C++ पढ़ाया जाता है, C नहीं पढ़ाया जाता. तो व्हाट यू सजेस्ट कि जो फ्रेशी है उसको C लैंग्वेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो. आप सभी के लिए एक बार फिर से मैं लाया हूं नया पॉडकास्ट. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इस बार कौन है. टुडे वी आर हैविंग मिस्टर ऑस्टिन लॉयड विद अस. अब कौन है ऑस्टिन लॉयड? ही इज अ CTO ऑफ EQvisor एंड co-founder ऑफ EQvisor. वेलकम ऑस्टिन ऑन आवर चैनल. थैंक यू सो मच. पहली बार एक पॉडकास्ट दे रहा हूँ तो आई एम रियली हैप्पी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. दैट्स इट. थोड़ा नर्वस, सो आई होप आई शेयर a decent story and inspire your audience. Yes. And those who don't know what is CTO, CTO एक chief technical officer होता है किसी भी कंपनी का. Okay, so I want Mr. Austin you to introduce yourself to our audience. Hello everybody, I am Austin Loyd. एक engineering student हूँ. काफी सालों से technical innovation में चल रहा हूँ. I started programming when I was in the 6th standard. I've been in the field of robotics when I was in the 6th, 7th standard, तो ये industry मेरे लिए नया नहीं है. I personally enjoy innovation and research and development. In case of EQvisor, I take the responsibilities of keeping the technical innovations in place, and I also manage the operations वहाँ पे. तो since मैं technical innovations as well as operations संभालता हूँ, एक काफ़ी अच्छा financial balance और एक काफ़ी अच्छा rational decisions ले पाता हूँ मैं. Because काफ़ी टाइम पे ऐसा होता है कि the technical team is little over ambitious. काफ़ी सारे features एक product में डालना चाहते हैं, and what that does is it takes a lot of time for things that shouldn't. तो काफ़ी financial resources आपको manage करने पड़ते हैं उस हिसाब से. So that ways I think team में and company में dynamics, it sets a great dynamic. And other than that, I have certifications from various institutes like Harvard and Google. कोई बड़ी बात नहीं है ये अभी के ज़माने में, but yeah, just to mention at least. Apart from my professional life, I think I take interest in sports like badminton, swimming. अभी एक नया नशा चढ़ा है मैराथन का. देखते हो कितने दिन टिकता है. Nice. So as you mentioned, you are the CTO of EQvisor. What is the role of CTO in a company? यार क्या होता है, मतलब क्या काम होता है CTO को कंपनी में? Good question, Amar. So let me give you a little bit of background on what EQvisor is. So we are a platform, a fintech platform, which digitalizes funding. Now, if you very carefully listen to what I say, I said the word digitalize. Digitalize it is not possible without technology. And इस ज़माने में है where everything is online, everything revolves around technology. So as a CTO, it is very important for me to set the dynamics, to set the bar, so that all my team members, all my employees, they follow it. एक work culture, एक work etiquettes ready करना is very important. And other than that, I think innovation starts with me. अगर आप Apple का example लेते हो, I don't think modern computers would have innovated to have fonts or good graphics or let's say basic window with curved rounded edges जो Mac OS में है अभी. So that is something which Steve Jobs pioneered in. You can say वो भी एक तरफ से technical division को ही lead कर रहे थे, वो भी वहाँ पे innovate कर रहे थे. So when you are leading a technical division, it is very important that you are very creative. You keep the fundamentals and dynamics very correct, and all in all ensure that you value the creativity of your employees, value the creativities, the ideas put forth on the table. Because हमें वही घिसा पिटा web designing नहीं करना है. We need something robust, we need something interactive, and we need something innovative. Only then we can ensure there is a growth in the industry. नहीं तो आजकल के ज़माने में वेबसाइट्स बनाना, डेवलपमेंट करना बच्चों का खेल है. There's nothing new. Yeah. So as a CTO, how do you prioritize and align technology initiatives with the overall business strategy of the company? So since I set forth the operations, and when I say operations, I even manage the business model. तो revenue streams कितने हैं, हम लोग कहाँ से पैसा कमा सकते हैं, and with that optimizing my applications and my GUI, वो completely मैं manage करता हूँ. So what that benefits a company and how it helps me in operating better is
I know what features I need in the program. So since I am the guy innovating, or the technical team is innovating, it is very easy for us to अभी काफी टाइम पे ऐसे हो जाता है कि we are over ambitious, we over innovate. तो इस हिसाब से it is easier for us to cut down things which are not necessary. It is easier for us to prioritize things. अभी certain revenue models में it happens that ज़्यादा graphical interface जरूरत नहीं है, and especially we are in a domain where let's say fintech में what really matters is smooth interface, and the most important is security. यहाँ पे मामला पैसा का. So how to revolutionize the process by keeping it secure as well, because we are doing something which not a lot of companies do. हम लोग auctioning का platform चलाते हैं in fintech, which is the first in class. So when we are setting things, when we are raising the bar, I think it is only fair जब हम उसे perfection करें. Again, I don't know why I like Apple so much, but if you see Apple, let's say if you compare Samsung and Apple, Samsung साल में मान लो 20 से 30 फोन बनाता है, but Apple साल में एक फोन बनाता है, but it makes sure that phone is perfect. उसमें कोई bugs नहीं है, उसमें it just makes sure कि वो उस leaderboard को top करता है, and that is what even I aim for. I don't want multiple things. मुझे jargon नहीं करना है, मुझे clutter नहीं करना है. I'll focus on one thing, I'll focus on one feature, and I'll make sure that is perfect. सो अभी ऑस्टिन ने जो कहा ना, वो रियल लाइफ में भी इंजीनियर लोग अपने डाल सकते हैं. व्हाट इज सेड, सैमसंग और एप्पल दोनों का उन्होंने बेस्ट कंपैरिजन बताया. अब आप बोलोगे हमें क्या बताया यार? सी, सैमसंग 20-25 फोन लेके आता है, एप्पल एक लेके आता है लेकिन मार्केट में बूम कर देता है. हर आदमी बोलता है कि नहीं मेरे को आईफोन लेना है, सब ईएमआई पे लेते हैं, लेकिन सब लेते हैं. सैमसंग का कुछ नहीं होता इतना. तो आप जो भी इंजीनियरिंग लाइफ में कोई भी काम कर रहे हो, आपको लग रहा है कि यार मैं फॉर सपोज स्टॉक मार्केट कर सकता हूँ, जैसे ऑस्टिन है वो एक्वाइजर में चले गए. वो क्यों चले गए वो हम क्वेश्चन अगला पूछने वाले हैं उनसे. तो आप कोई भी काम लो तो उसके अंदर फोकस करो, चाहे आपको टाइम लग जाए, बट डू नॉट पुट बोथ द लेग्स इन बोथ द बोट्स. एक ही नाव में चलो, दोनों नाव में अपने पैर मत रखो, तो ना इधर के हो पाओगे ना तो इधर के हो पाओगे. एक ही चीज में चलो और एक चीज में बेस्ट दो. वो कहते हैं ना, ऑस्टिन ने भी एक कहानी सुनी होगी कि पुराने जमाने के लोग बोलते थे कि यार भले तू नाई की दुकान खोल, लेकिन ऐसी खोल कि पूरे गांव में वो नाई की दुकान नहीं होनी चाहिए. सो गोइंग फर्दर विद द क्वेश्चंस, ऑस्टिन एज अ सीटीओ आपको कौन कौन सी कोडिंग लैंग्वेजेस करना पसंद है? As a अभी तो actually lot of people start with WebD, मतलब HTML, CSS, फिर natural progression चला जाता है JavaScript में, then Python and etc. But if you ask me personally, I enjoy backend programming, जहाँ पे C, C++, Python use किया जाता है. I even enjoy embedded programming, जहाँ पे हार्डवेयर के साथ आप बहुत closely correlate करते हो और हार्डवेयर के लिए ही प्रोग्राम करते हो. तो पर्सनल प्रेफरेंस ये मेरा है. ज़्यादा डिफिकल्ट भी वही है backend programming, because you need to be in a good synchronous with the front end, ताकि आपका फ्रंट एंड भी काफी अच्छा रहे. एंड यू ऑल्सो नीड टू मेक श्योर कि आपका जो फिजिकल एस्पेक्ट है, जो आपका हार्डवेयर है, वो भी एक सिंक्रोनस में चले, because if they don't work in tandem, you might not have the most optimum and efficient machine or an ecosystem. So I prefer backend programming. परफेक्ट. पर्सनली एक और क्वेश्चन है आपसे कि यार एट विच पॉइंट आपको लगा कि नहीं लाइक C++, पाइथन ये लैंग्वेज करनी है? क्योंकि एक टाइम होता है कि जब आप सारी लैंग्वेजेस को कवर करना चाहते हैं कि यार DSA भी कर लूँ, यार ये लैंग्वेज भी कर लो, यार ये भी कर लो. तो ये आपको इंटरेस्ट कैसे समझ आया कि यार क्यों ये लैंग्वेज में मेरे को आगे बढ़ना है? तो यहाँ पे मैं आपका जो आपने नाई की स्टोरी बताई थी, यहाँ पे थोड़ा रिलेट करना चाहूँगा. इन द वर्ल्ड ऑफ इंजीनियर्स एंड इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग, एक नाई का दुकान खोलना इज वेरी गुड, बट इंग्लिश में कहावत भी है, master jack of all, master of none. So it is good to be a jack of all and master of none in programming, because एक particular programming language को master करना is difficult and more time consuming, and sometimes even a little less rewarding as well. But if you have the knowledge for all the programming languages, basically sky is the limit. मतलब आप आपका खुद का database engineer कर सकते हो. You can manage your own cloud computings as well. You can design your own front end, and you can make sure your back end is made in such a way that आपका एकदम efficient and smooth system रहे. So coming back to your question कि C++ and Python कब सीखा? I actually started my programming journey with C. Thanks to my father. आज जो भी हो या कल जो भी रहूँगा उनकी वजह से ही हूँ. So he guided me and pursued me, you should do C, because it is said that C is the mother of all languages.
वो सबसे वन ऑफ द मोस्ट पुराना लैंग्वेज है। यस यस करेक्ट। तो ही सजेस्टेड मी कि मैं सी सीखूं। काफी एक थोड़े बहुत मैंने प्रोग्रामिंग चालू की उसकी। एक बुक रेफर करता था मैं, लेट अस सी फ्रॉम यशवंत कनेडकर। वो करते 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 आई बेसिकली डेवलप माय प्रोग्रामिंग लॉजिक, जो अभी इट इज कॉल्ड एज डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। तो थोड़ा मेरा एक लॉजिक बिल्ड हुआ, एंड दिस इज समथिंग व्हिच आई हैव सीन पर्सनली एंड लॉट ऑफ पीपल विल एग्री अपॉन दिस, कि एक बार आपका वो डीएसए एंड एक लॉजिक आपका बिल्ड हो गया इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग, एक नया लैंग्वेज लर्न करना इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। आफ्टर दैट इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ सिंटैक्स। दैट इज द सेम थिंग दैट हैपेंड विद मी। मुझे शायद सी प्लस प्लस एक डिसेंट लेवल तक सीखने के लिए एक आई थिंक 2-2.5 महीने लगे, बट आई विल नॉट से द सेम केस अबाउट सी प्लस प्लस। when मुझे 2.5 months लगे थे for C, it only took me a month for C++, and gradually वो कम होते गए when I progressed into more languages. So what it shows is programming is not about language syntax और IDE, मतलब जो भी developing softwares आप use करते हो. It is all about the logic you have, and it is all about the most creative solution you can provide to a problem. That is what programming is. एज यू मेंशनड हियर सी लैंग्वेज राइट। सो हमें पता है कि मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में ट्वेल्थ के बाद में जब भी हम क्रॉस करते हैं, जो कि लाइक जो कंप्यूटर का सब्जेक्ट नहीं लेता 11th-12th क्लास में, वो डायरेक्टली कॉलेज आता है राइट। तो कॉलेजेस में मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में C++ पढ़ाया जाता है, सी नहीं पढ़ाया जाता। तो व्हाट यू सजेस्ट कि जो फ्रेशी है उसको सी लैंग्वेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अमय जी, उसके लिए एक बहुत बढ़िया रीजन है। सो what C is, C एक बहुत पुराना एंड बेसिक लैंग्वेज है। उसके फंडामेंटल्स आर ऑल स्टिल अप टू डेट। हम आज भी C के फंडामेंटल्स यूज करते हैं काफी जगहों पे, मतलब सॉफ्टवेयर टू हार्डवेयर कम्युनिकेशन हो गया। आई एम क्वाइट श्योर इट विल बी यूज्ड इन C, द ड्राइवर्स एंड ऑल विल बी प्रोग्राम्ड इन C. But why we learn C++ currently is C++ is an OOP, object oriented programming. So object oriented programming is a completely different thing. यहाँ पे you can declare classes, you can declare objects. Basically यहाँ पे आप प्रोग्राम के अंदर ही you can pass through data a lot more securely and a lot more easy. अभी in case of C it is very difficult to have a very secured secured network जहाँ पे आप data को pass कर रहे हो, whereas in OOPs it is much more easier, जहाँ पे एक object को declare कर देते हो and उसके अंदर ही you can make sure कि ये variable का ये value हम pass on कर रहे हैं और नहीं। काफी लेमन टर्म्स में समझा रहा हूँ। आई होप टेकीज मेरे से रिलेट कर सकेंगे। गुस्सा ना हो। या आई होप मैं थोड़ा नॉर्मल शब्दों में कहने की ट्राई कर रहा हूँ। Correct. तो दैट इज द रीजन C++ इज टॉट अभी के करिकुलम में, बिकॉज इफ यू गो फॉर पाइथन, इफ यू गो फॉर एनी अदर एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, दे आर ऑल OOPs, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो अगर हमें उनका आर्किटेक्चर और उनका फंडामेंटल सीखना है, C++ इज योर बेस। बट इफ यू आर कंप्लीटली न्यू टू प्रोग्रामिंग एंड आपको फ्रॉम द स्क्रैच चालू करना है, I don't think there is any more or any better user-friendly programming language than C. Yeah. एक पर्सनल क्वेश्चन रहेगा ऑस्टिन। जी। स्टडी, कॉलेज एंड एंटरप्रेन्योर, CTO का जर्नी, ये तीनों चीज आप एक दिन में कैसे मैनेज करते हो? मतलब टाइम कैसे मैनेज करते हो? अभी ऑनेस्टली बोलूं तो नहीं कर पाता, बट for the question, I'll give you an answer. You have a choice. You can be somebody, you can be someone, or you can be the one. So this is always a choice a person takes in life. अगर आपको बहुत safe and easy life बितानी है, you can be someone. वही घिसा पिटा 9 to 5 job, वही पढ़ाई, वही घर का खाना, वही घर का दाल, वही दोस्तों का खेलना. You can be someone. It's a good life, no problem. I actually enjoy that life more. But if you want to be the one, थोड़ा तो आपको you need to compromise on a lot of things, be it time with family, be it the time you spend outside, be it the time you spend on Instagram, everything. So as soon as आप में वो एक जोश जाग जाता है कि यार कुछ तो करना है लाइफ, कुछ तो करना है, जो अभी I'll give you a little bit of a backstory to it. I am not a great student. In fact, great भी बोलना नहीं चाहिए, but पढ़ाई मेरे से उतनी ज्यादा होती नहीं। तो कोई भी इंजीनियर से नहीं होती। So EQvisor happened when I had just passed my 12th standard. Yeah. मेरे मार्क्स बिल्कुल अच्छे नहीं थे, तो तब मेरे मन में था कि यार पढ़ाई से तो कुछ होने नहीं वाला एंड कुछ करना। So that is the point in my life where I had to choose between being someone or being the one. So I of course chose the second option, कि सोचा कि मान लो कुछ भी आए देख लेंगे, what's the worst that is going to happen.
Then college हुआ. Now I'm managing my EQvisor. I'm managing my academics, my co-curriculars, my certifications, because end of the day मुझे भी upgrade करता ही रहना पड़ेगा. नहीं तो company का development it will scale down. So all of that it just happens. It all depends on your interest. अब काफी लोग बोलते हैं कि I work life balance जो बोलते हैं कि सुबह काम कर लिया और शाम को फिर पार्टी. For me, my work is my party. I don't think you would have seen a person who would enjoy work so much as I do. And in EQvisor, our working environment and atmosphere is so joyful that काम करने में मजा आता है. काम करने में We sit, तो हम लोग मेरे टीम के साथ मैं रोज बैठता हूँ. Since technical team मैं लीड कर रहा हूँ तो रोज बैठते हैं. So we have a massive table जहाँ पे all 8-9 engineers we sit with our laptops, connect power supply वगैरह connect करके we put on songs. Even though सब अपना अपना काम कर रहे हैं, even though सब focus है, we have songs and we enjoy. So we ensure कि काम भी हो रहा है, मजा भी आ रहा है and सीख भी रहे. Because end of the day, growth is something that is important. पैसा तो आएगा, parties तो आती जाती रहेगी, but what is most important is what you learn and how you grow. तो ये दोनों चीजों को पकड़ के these are the two words which I'll say around which our working environment is in EQvisor. And this is what makes work with them very fun. तो मुझे कभी वो प्रेशर लगा ही नहीं कि वर्क लाइफ बैलेंस करना है, पढ़ाई मैनेज नहीं हो रही है, या अपस्केलिंग मैनेज नहीं हो रहा है, या कंपनी मैनेज नहीं हो रही है. नेवर. तो सिंस सब कुछ इज इन हार्मनी विद ईच अदर, it is not a very difficult life if you choose to have one. ऑस्टिन ने जो कहा, वो पार्टी नहीं करते, उनके लिए काम ही करना उनके लिए पार्टी है, राइट? अब आप लोग सोच रहे होंगे यार भाई क्या बकवास बात कर रहा है. सी, उन्होंने अपना फ्यूचर देखा इसलिए वो आज ये काम कर रहे हैं. भाई घिसवाने में किसी को मजा नहीं आता. कॉलेज ना 10 से 5 में पहले इतना कुछ करवा देता है ना इंजीनियर से कि भाई आके सीधा बिस्तर देखता है कि भाई सो जाओ. 99% इंडिया में लोग वही करते हैं. लेकिन 1% में ऑस्टिन जैसे एंटरप्रेन्योर्स, ऑस्टिन जैसे एक बिजनेसमैन बाहर आते हैं जो इन फ्यूचर कुछ करते हैं. फिर आप सोचते हो कि अरे यार मैं भी कर लिया होता, राइट? और ऑस्टिन ने एक बात बोली थी कि यार जो भी काम करो अच्छे से करो. 3 इडियट्स में भी ये बात बोली थी कि जो भी काम करो ना दिल लगा के करो, मन लगा के करो, तो काम करने में मजा आएगा. एज ऑस्टिन टोल्ड कि यार मैं पार्टी नहीं करता, पार्टी ही मेरा काम है. यार पार्टी करना किसको नहीं पसंद इंजीनियरिंग लाइफ में? अगर पार्टी नहीं की है तो क्या. एक बड़ा स्टेटमेंट है ऑस्टिन के द्वारा कि यार मेरा काम ही मेरे लिए पार्टी. यार ये चीज तो आप सभी लोगों को मोटिवेट करना चाहिए. भाई मेरे को तो कर दिया है आपने. थैंक यू सो मच ऑस्टिन. My pleasure, Amay, my pleasure. It is not wrong to party. ऐसा नहीं कि मैंने अपने जिंदगी में कभी पार्टी किया नहीं है. But वो अभी में एक फेज आ जाता है जब everything in your work is interesting. And I think all this interest and happiness and this joy goes back to the team, because जो एक aura, एक enthusiasm मेरी टीम में है, I don't think I can replicate it any time in the future. So thanks to team EQvisor, all the tech team here कि एक इतना बढ़िया work environment रखा है कि a normal Monday morning is not मतलब एक पार्टी से कम नहीं है. तो या ऑस्टिन, एक और क्वेश्चन जो सारे इंजीनियर्स के मन में होगा, राइट? और जो फ्रेशी उनके तो बिल्कुल ही होगा. नेम 3 यूट्यूब चैनल्स यू सजेस्ट फॉर द फ्रेशर्स इंजीनियर्स जो 12th के बाद जस्ट आए हैं और वो चाहते हैं कि यार कौन सा ऐसा यूट्यूब चैनल है जो मैं देखूं जिससे मेरे को सब कुछ मिल जाए, सब कुछ मैं सीख लूं. अमय, आपने तो थोड़ी दुविधा में डाल दी मुझे. आई एम नॉट अ ग्रेट फैन ऑफ यूट्यूब में देख के पढ़ना. मैं और एप्लीकेटिव लर्निंग में बिलीव करता हूँ. 12th में 6-6 घंटे की 1 शॉट वीडियोस 2x पे देख के लगने के बाद बीटी हो गई थी मुझे. तो यूट्यूब चैनल को देख के सीखना नॉट वेरी कंफर्टेबल विद. बट आई डिड यूज सम यूट्यूब चैनल्स. जब मैं पाइथन सीख रहा था आई यूज्ड कोड विद मॉश. काफी बढ़िया सिखाते थे वो. And after that, whatever I learned was through certifications and certification platforms like Udemy, Coursera, LinkedIn Learning, and etc. Because what एक difference रहता है उनमें. YouTube में आपको सिखाते हो, because वो बस एक screen play दिखा देंगे आपको कैसे से चलाना है, and that is all they do. वो आपको सिखाते हो. What you miss out is applicative learning. मान लो कल रात जो आपने पढ़ा, मान लो let's say you learned how to print hello world, because that is how all the programs will start. And today you're going to learn about variables. 10 दिन के बाद if I ask you how to print hello world or how to use variables, आपको याद नहीं होगा because ये आपने यूज नहीं किया. So certification platforms में what they do is
they give you assignments. Without those assignments, you cannot get the certificate. So you are obliged to use whatever they have taught into your program or into your code. तो वो आपका एक एनालिटिकल रिमेम्बरेंस हो जाता है. You tend to remember things more better, and वो एक creativity ला देता है. So the more and more you use उनके assignments में, you get more creative, and what creativity gives you is a more optimized and a more fruitful system. तो अगर आप नए हो प्रोग्रामिंग के लिए, आई विल डेफिनेटली रिकमेंड प्रोग्रामिंग यूट्यूब वीडियोस देखना, बिकॉज वो आपके अंदर वो जो एक एंथुसियाज्म, एक क्यूरियोसिटी है, वो लाती है. बट इफ यू वांट टू गो ऑल गन्स आउट एंड इफ यू वांट टू सीरियसली लर्न समथिंग इन प्रोग्रामिंग, आई विल से गेट सम सर्टिफिकेशंस. एंड सर्टिफिकेशंस के लिए यू डोंट नीड मनी. आई नो, मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ, तो आई नो पैसा बहुत मुश्किल चीज है जो हाथ में रहता है. तो देयर आर लॉट ऑफ big universities like Harvard जो फ्री में सर्टिफिकेशंस देता है, and they are really good. वो आपको काफी एक streamlined syllabus सिखाते हैं, and great assignments, everything is fantastic. And end of the day, Harvard से कौन सर्टिफिकेट नहीं लाना चाहता, right? So if everything is there, it is just that you need to open your eyes and look. So next time अगर आपको seriously programming जाना है, I will suggest Instagram खोलने से पहले you go on Google, search few courses which might interest and upskill you, and take them seriously, time it well. And have fun. ऑस्टिन ने यार और मेरे को पॉडकास्ट 3 पॉडकास्ट में ले चुका हूँ गाइस, लेकिन जो ऑस्टिन के साथ पॉडकास्ट हो रहा है ना, ओपी बीइंग वेरी प्रैक्टिकल, मतलब सारी फैक्ट्स वाली बातें बोल रहे हैं. सी इंजीनियर्स क्या करता है, हम दोनों इंजीनियर्स हैं, राइट यार. मोबाइल खोला, रील चला, ये करा. सी आज की दुनिया में ना मोबाइल में सब कुछ है, फ्री कोर्सेज है, आपको तो जुगाड़ में भी मिल जाते हैं यार. DSA का आपको कोई कोर्स 1000 रुपये में मिल रहा है ना, तो टेलीग्राम पे आप सर्च करो, सारा HD में आपको फ्री में मिल जाएगा. पर हम टेलीग्राम पे क्या करते हैं, मैं कोई मूवी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन 1080p में ये मूवी मिल जाए 1080 में ये मूवी मिल जाए, वो देख लूँ HD में. तो यार ये सब नहीं. 4 साल है आपके पास में, सिर्फ 4 साल. ये 4 साल में कर लो तो जिंदगी कुछ और है. ओके यार, सारे इंजीनियर्स का एक बड़ा सवाल है, इज DSA रियली इंपॉर्टेंट? Yes, DSA is important. DSA, it is basically the logic which you have in programming. DSA, algorithms, ये सब वो दिखाती है जो आपकी creative logic में है. End of the day, that is what matters. आपका जो syntax है, what the language you use, they are all second. But the way your mind thinks, जब आप एक program या एक problem को देखते हो, आप उसे कैसे attack करते हो, आप कैसे एक optimized and most efficient solution provide करते हो, that really matters. And I think अभी जो काफी interviews and काफी content में दिखता है DSA, etc, lead code, hackathon, hacker rank and etc. Yes, they are really helpful. आपको एक बचपन में एक क्वेश्चन होता था HOTS करके, higher order thinking skills. So yes. I will definitely say DSA is HOTS. वो एक काफी क्रिएटिव एंड इनोवेटिव चीज है जो आपको प्रोग्रामिंग लॉजिक बिल्ड करने में काफी मदद करता है. यप. सो DSA इज वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी देखो, DSA ऐसा लैंग्वेज है ना जो कोई इंजीनियर को नहीं आता. पर्सनली मैं भी जब इंजीनियरिंग कर रहा था, अभी भी कर ही रहा हूँ, मेरे को DSA उतना अच्छे से नहीं आता था, लेकिन करा क्योंकि यार एट द एंड हमें प्लेसमेंट्स में बैठना है, राइट. हमें अच्छी से अच्छी कंपनी उठाना है. थोड़ा सा उसमें लॉजिक बिल्ड करोगे ना तो आएगा आपको लैंग्वेज. ट्राई फॉर द बेस्ट. सो ऑस्टिन, ये पॉडकास्ट आपके साथ में बहुत जबरदस्त रहा है. मैं आपसे कुछ टिप्स मांगना चाहूंगा हमारे न्यू कमर्स को या हमारे न्यू इंजीनियर्स को, जो आप आपकी साइड से उन लोगों को देना चाहते हो. तो अमय जी, आपके साथ मुझे भी काफी मजा आया. एंड माय सजेशन और मेरी गुजारिश रहेगी, जो भी ये देख रहे हैं, डोंट लिमिट योरसेल्फ. डोंट लेट दोज ओल्ड थॉट्स, दोज ओल्ड क्या बोलते हैं उसे, कन्वेंशनल थिंकिंग स्टॉप यू. आई एम क्वाइट श्योर कि जब हम 18-19 के रहेंगे, स्पेशली इंजीनियर्स, और जब मंथ एंड में पैसे की कमी आएगी, एवरीबॉडी विल थिंक ऑफ अ साइड हसल, पैसे कमाने के लिए, बी इट बिजनेस, बी इट कंटेंट क्रिएशन, बी इट यूट्यूब, समथिंग. बट हमेशा वन थिंग दैट स्टॉप्स पीपल इज उम्र. यार मैं 18 का हूँ, काफी टाइम है मेरे लिए, देख लूंगा. इवन पढ़ाई में, इवन इन स्टडीज यू प्रोक्रास्टिनेट कि यार 2 दिन में पेपर है, कल पढ़ाई कर लूंगा. एवरीथिंग. अभी तो एक नया कॉन्सेप्ट भी चालू है, YOLO, you live only once. You live only once है something, काफी आउटडेटेड हूँ मैं. तो don't let these ruin you. अगर आपको कुछ करना है, the first thing is to get started. That is your first step. And I think आपका 50% काम वहीं पे खत्म हो जाता है as soon as आपने ठान लिया और आपने अपना पहला स्टेप ले लिया कि मुझे चालू करना है. Then and there itself it creates a mindset कि I need to finish. And then it is all about persistence and perseverance. कि मुझे कैसे भी करके ये काम निपटाना है. Other than that, I think do whatever keeps you happy, do whatever keeps you interested. Luckily for me, it was engineering and innovation. For you, it would be something else. For the viewers, it would be something else.
तो as long as जैसा मेरा वाला फंडा था, काम में ही मेरी पार्टी है, so whatever, do what makes you happy and what makes you to enjoy the work itself. End of the day, it is the journey that matters, not the destination. So जर्नी ऐसा बढ़िया चूज करो कि आपको डेस्टिनेशन के बारे में परवाह ही ना पड़े. करेक्ट, बेस्ट काम वो करो जिसमें आपको मजा है. अब मजा जिस काम में आ रहा है उसमें आप बेस्ट दोगे, और जो काम आप मर्जी से नहीं करोगे ना, आप चाहे बेस्ट दे दो, वो काम बिगड़ने ही वाला है. यस. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप आपको वीडियो में बहुत मजा आया होगा और सारे इंजीनियर्स को अपना क्वेश्चंस का सवाल का जवाब मिला होगा कि यार डीएसए इंपॉर्टेंट क्यों है, या डीएसए इंपॉर्टेंट हमें करना है या नहीं करना है, सीटीओ का रोल क्या होता है, ये सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर जरूर मिला होगा. Thank you, Austin, for being with us, for sharing your ideas, innovations to our audience. Thank you. Thank you.